So, a very good morning to all of you. Jai Hind and welcome to the daily current affairs and MCQ series. Hanji, I hope you all are doing good. Yes, good morning Iqbal Singh. Good morning Shubhankar, Rohit. Chaliye, great. So, let's begin with the first article that we are discussing today, that again concerns the health of the individuals in India, because again the Nipah virus has come back to haunt the South Indian state of Kerala, right? So, this is after a gap of over 3 years. So let's discuss what exactly is the Nipah virus. Certainly, it's just like the SARS-CoV-2. It's a zoonotic disease, and certainly this needs to be revisited. So, after a gap of over 3 years, a case of Nipah virus infection was reported from Kozhikode, and a team from Delhi's National Center for Disease Control is monitoring the case. They have gone to the place where the infection was found, and a boy of the age of 12 years has lost his life because of the Nipah virus infection. So what exactly is the fatality rate here? It is estimated at between 40 to 75% depending upon multiple factors. But yes, it can be deadly, and that is what is the concern of the health authorities also, and that is why this team from Delhi has been sent all the way to Kozhikode, right? Then this rate can vary by the outbreak depending upon multiple factors, including local capabilities for epidemiological surveillance and clinical management, because remember, this is termed as a high contamination risk disease. That is, you can get contaminated because of the disease being prevalent in the nearby population, and that is why the local conditions or the local support system with respect to the surveillance that can be undertaken and the people can be isolated, that has to be great, right? Then fruit bats, if we talk about the hosts, then the fruit bats are considered to be a natural reservoir or host of the virus, through which it is believed that it initially jumped into human beings, and right now, because we are calling it a zoonotic disease, it gets transferred from animals to humans, right? Then if we talk about some symptoms, acute encephalitis and respiratory illnesses, these are some of the symptoms that a person shows when contracted with the Nipah virus, and the transmission happens mainly through consumption of contaminated foods that are already containing these viruses, ठीक है? तो ये पूरा नीपा का जो पहले भी 3 साल पहले आउटब्रेक एक काफी सीरियस आया था, not just in India but in other countries also. Bangladesh has had the cases of Nipah, Philippines has had cases of Nipah, Africa has seen cases with respect to Nipah, right? So let's take a couple of questions now. Hanji, which of the following statements is or are correct with respect to the Nipah virus infection? First, Nipah virus can be transmitted from humans from animals such as bats or pigs or contaminated foods. Second, the Nipah virus is known to spread far more rapidly than SARS-CoV-2. And third, Nipah virus infection in humans can cause acute respiratory infection and fatal encephalitis. Yes, please type your answers quickly. Hanji, good morning all. Chaliye, great. So we have some of the answers here, A and B. ठीक है, कविता, रोहित, शुभांकर, बुशरा, संकीर्तना, शिव कुमार. चलिए ठीक है, देखो जहां तक पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. अभी हमने डिस्कस भी किया कि ह्यूमंस में एनिमल्स से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आ सकती है, ठीक है. लेकिन जब हम इसको कंपेयर करें, अगर सार्स, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इससे अगर कंपेयर करें, देन इट डज नॉट स्प्रेड मोर रैपिडली बट रादर द सार्स वायरस इज नोन टू बी स्प्रेडिंग मोर फास्ट देन द निपा वायरस, ठीक है. लेकिन यहां पे एक चीज है जो कंसर्न है कि फेटेलिटी के मामले में जो है निपा इज बिलीव्ड टू बी मोर फेटल when we compare it to SARS, right? But yes, transmissibility में Nipah virus जो है that is below SARS-CoV-2. Then last statement is also correct that it can cause acute respiratory infection and fatal encephalitis, ठीक है.
तो आंसर आपका हो जाएगा 1 and 3, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दमन। चलिए ग्रेट, जिन लोगों ने ए टाइप किया था दैट इज करेक्ट, यस। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is or are correct with respect to the origin of Nipah virus? First, the first outbreak of the Nipah virus among humans was reported from Malaysia in 1998. Second, although it is a zoonotic disease, but the respiratory droplets of an infected person can also transmit the virus. हाँ जी, origin और transmission दोनों से relate कर रही है यहाँ पे statements. Please answer these. Okay, I'll just wait for a. चलिए ग्रेट, कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं बी, ठीक है। देखो, जो मलेशिया में एक विलेज है, उसी विलेज के नाम से ये जो नीपा वायरस है ये अपना नाम डिराइव करता है। और 1998, 1999 मलेशिया एंड सिंगापुर, these were the first two countries where Nipah was spotted, right? So first statement is correct. Then the second statement, that is, although it is a zoonotic disease, that is, the virus gets transmitted or jumps from animals to humans, ठीक है। दूसरी बात यहां पे ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है दैट इज नॉट येट कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड, कि ह्यूमंस जो हैं वो ह्यूमंस को डायरेक्टली जो है नीपा वायरस पास ऑन करते हैं या नहीं, दैट इज येट टू बी directly established by the studies. But there was a recent study that was conducted which has established that if a person is infected with Nipah virus, then through the respiratory droplets of that infected person, it can certainly transmit the virus, right? So that is what right now which the study has established, and hence for question 2 you'll have both 1 and 2 as correct, ठीक है। ये जो human to human direct transmission है, इसकी इस study से पहले it was not established as such, right? Whether Nipah gets transmitted directly from humans to humans, ठीक है। तो ये जो study थी, that is person to person transmission, was fully not established before that. But this study that was conducted by the Bangladeshi researchers, that has come out with this particular observation which we have discussed in the question, ठीक है। Firstly, it was spotted in pigs. Yeah, sir, exactly. देखो, जब zoonotic disease की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा उसका zoonotic का मतलब ही ये है कि एनिमल्स में प्रेवलेंट था वो डिजीज, उन्हीं में स्पॉट किया गया था पहले, बिफोर इट जम्प्ड टू द ह्यूमन रेस। Before infecting any sort of human population, that disease was not prevalent in the humans, the disease was prevalent only in the animals, ठीक है। शुभंकर, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे ये थी कि सेकंड स्टेटमेंट ये थी कि ये ऑल्दो एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब कि हमने एस्टैब्लिश ये किया है कि स्टडीज की वजह से या स्टडीज की बेसिस, ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कि द डिजीज, द वायरस गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, right, through multiple channels. But the point is कि recent studies ने ये भी establish किया है कि अगर किसी human being के respiratory droplets में अगर जो है वो infected है नीपा से, then that person can also transmit the virus, ठीक है। That is what the second statement here meant. चलो, I believe that is clear. Let's move to the next article. So, the Ministry of Information and the Ministry of Electronics and Information Technology, that is MITI, has asked the startup accelerators to identify and give a boost to the startup mechanism, the startup ecosystem in India. And for that, let's discuss what exactly has the MITI done. So it has formed a 10-member panel that is going to be headed by whom? Remember, UPSC perspective से ये नाम भी important है, आपको याद रखना, अजय प्रकाश साहनी, he is going to head this panel, right? Because you might be asked previously also, UPSC has asked such questions कि कौन जो है, who's heading or who's the chairman of the panel. So this panel which has been formed, it will be led by Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology,
राइट। अब ये जो अजय प्रकाश साहनी पैनल फॉर्म किया गया है, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज इट विल फॉर्मुलेट अ प्रोसेस टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड द अपकमिंग और न्यू स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स। ठीक है, ये एक्सेलरेटर्स दे वुड देन सेलेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स टू स्केल फॉर सॉल्विंग इंडियाज प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट। अब इस स्टेटमेंट को ब्रेक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हो यहां पे ये रहा है, मीटी ने एक पैनल जो है फॉर्म किया है, दैट इज द अजय प्रकाश साहनी पैनल विच इज अ 10 मेंबर पैनल। ये पैनल क्या करेगा? इट विल फॉर्मुलेट अ प्रोसेस टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स। अभी यहां तक रुको और यहां तक समझो कि ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर जो है ये क्या चीज है। देखो, किसी भी कोई भी कंपनी है जिसने स्टार्ट किया है किसी भी फील्ड में, विच हैज जस्ट स्टार्टेड विद देयर ओन वेंचर, वो इनिशियल स्टेजेस में है। इनिशियल स्टेजेस में उसने थोड़ी बहुत फंडिंग जो है इकट्ठी कर ली, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, अपना वेंचर सेटअप कर लिया। अब उसकी डाउन द लाइन 1 ईयर 2 ईयर्स एक ऐसी स्टेज आ गई है जब वो सेटअप तो हो चुकी है, लेकिन उसकी ग्रोथ में उसको जो है बूस्ट नहीं मिल रहा। इस चीज को यहां पे समझो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर। हम कई बार बात करते हैं स्टार्टअप इनक्यूबेटर की। अगर आप इंडियन इकोनॉमी आपने पढ़ी है सही से, तो आपने स्टार्टअप इनक्यूबेटर टर्म यू माइट हैव कम अक्रॉस दैट, स्टार्टअप इनक्यूबेटर। हियर वी आर डिस्कसिंग स्टार्टअप एक्सेलरेटर। ठीक है, एक वेंचर है जो स्टार्टअप है, उस जिसने सेटअप कर लिया है अपना वेंचर, डाउन द लाइन मे बी 1 2 3 ईयर्स that startup is facing some troubles or that startup is unable to give proper or the required growth to its venture. Herein comes the role of an accelerator. यहां पे एक्सेलरेटर की भूमिका आएगी कि अब ये एक्सेलरेटर जो है, जिसको हम स्टार्टअप एक्सेलरेटर कह रहे हैं, दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप। राइट, कि अब ये जो स्टार्टअप है ये इनिशियली स्टेबल हो गया है, ये कह लो या एक बार कह लो कि सर्वाइव करने लायक हो गया है, ये अपना काम धंधा सेट कर लिया इन्होंने। ठीक है, अब इनकी जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको आगे एनेबल करने के लिए, ये प्रमोट करने का काम कौन करेगा? स्टार्टअप एक्सेलरेटर। ठीक है, जब हम इनक्यूबेटर की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टार्टअप इनक्यूबेटर, तो ये जो इनक्यूबेटर है ये स्टार्टअप जब हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस वक्त यूज में आता है, या उस वक्त इसका रोल है, व्हेन द स्टार्टअप इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। Right, so please appreciate the difference between or distinguishing the difference between the startup accelerator and startup incubator. ठीक है, फिर दूसरी चीज जो है कि यहां पे इनक्यूबेटर जो है, ये जो है किसी भी स्टार्टअप की एस्टैब्लिशमेंट में या उसकी फॉर्मेशन में जब हेल्प करता है, तो जनरली दीज इनक्यूबेटर्स दे डू नॉट चार्ज और दे हैव नो चार्जेस which they charge from the startup which they are helping in establishing. Right, but when we talk about the startup accelerator, they usually charge a nominal fee which is in the form of equity. That is, they will ask you to give them some equity in them for the startup accelerator. ठीक है, और ये ड्यूरेशन इसकी काफी कम होती है, मैक्सिमम इट विल हेल्प अ स्टार्टअप विद इट्स ग्रोथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. ठीक है, और ये इंस्टेंट फंडिंग भी ऑफर करते हैं स्टार्टअप को बूस्ट देने के लिए। तो स्टार्टअप एक्सेलरेटर और स्टार्टअप इनक्यूबेटर जो है दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने आपको बता दिया कि इनिशियली जब स्टार्टअप हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई नया वेंचर उसको जो है बनाया जा रहा है, उस स्टेज पे यू हैव द रोल ऑफ स्टार्टअप इनक्यूबेटर, whereas when later you want to give a boost to its growth, then you have the role of a startup accelerator. ठीक है, ये चीज क्लियर है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज यू सी राइट नाउ मीटी इज गिविंग सब्सटैंशियल significance to the role of a startup accelerator so as to give boost to the startup ecosystem in the country. ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन जो है आप लोगों को, you should be very clear with it. चलो अब यहां से स्टोरी आगे चलाते हैं। देखो, यहां तक हमने समझ लिया कि ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर क्या है। अब ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर जो है ये हमने समझ लिया, इसके बाद ये करेंगे क्या? These would then select information technology, that is IT based startups to scale for solving India's problems, creating positive social impact. मतलब कि जो ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर हैं ये चूज करेंगे कुछ आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स को जिनको ये सपोर्ट देंगे। ठीक है,
और ये सपोर्ट देने के पीछे ओवरऑल इंटेंट या ऑब्जेक्टिव क्या है, वो यही है कि अल्टीमेटली आपको जो है आईटी बेस्ड या डिजिटल बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू यू हैव टू गिव सर्टन, यू हैव टू सॉल्व द चैलेंजेस और you have to provide the solution to the challenges for the Indian issues, right, including the social impact, मतलब कि social including the social challenges जिसकी वजह से positive social impact पड़ सके, ठीक है. So that is the long story short cut down for you in you know as simplistic way as I could have. Then as a part of this program, the IT Ministry will also ask these accelerators to build customized acceleration programs and fit the needs of the selected startups. मतलब देखो यार, हर एक स्टार्टअप की नीड डिफरेंट हो सकती है, वो किस सेक्टर में है, किस पर्टिकुलर क्लाइंटेल को केटर कर रहा है, that could be different. So for that particular startup based on its own peculiar or you can say needs, the accelerator has been asked by the IT Ministry to customize these programs so as to suit the particular needs of a startup. देखो सिंपल सी बात है, उस स्टार्टअप को जो है सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं रखना है, उसको हमें ग्रो करके लेके जाना है बड़ी कंपनी पे, एक बड़े स्केल के लेवल की फर्म पे, ठीक है. और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसको जहां तक सपोर्ट हो सके वो दे सकें, और ये सरकार आईटी मिनिस्ट्री यहां पे वही करने की कोशिश कर रही है, राइट. देन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम का, इट इज टू डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर अ रोबस्ट स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स, ताकि हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवा सकें, to give them opportunity to work with well-funded startups which will be working for Indian needs. ठीक है. तो certainly intent यहाँ पे गवर्नमेंट का अच्छा है, एग्जीक्यूशन अगर अच्छी रही तो certainly हमें इसके रिजल्ट्स देखने को भी मिलेंगे, राइट. हाँ जी, ये पूरी स्टोरी स्टार्टअप की, स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स की, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स की, ये क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन प्लीज गिव अ थम्स अप और जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स. And then we'll move to the question. Chalo, I'm turning to the question. Meanwhile, you can type it in the comment box. Yes. So, which of the following statements is or are incorrect with respect to startup accelerators of Meity for production, innovation, development and growth scheme? First, Meity Startup Hub is also acting as the implementation agency, and it will take some equity in the startups that will apply under the scheme and qualify for the grant. Second, the aim is to identify 300 startups and help them with customer connect, investor connect and international immersion over the next 10 years. हाँ जी, चलो, great. Thank you for your confirmations. Please now try and crack this question. Okay, Shubhankar says A, Kavita says B, Bittu again A. चलिए, ग्रेट, ठीक है. संकीर्तना सेज बी. देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मीटी स्टार्टअप हब जो है दैट इज आल्सो गोइंग टू एक्ट एज द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी एंड इट विल हैव सम इक्विटी इन द स्टार्टअप, दैट इज करेक्ट, सर्टेनली, राइट. सो फर्स्ट इज करेक्ट. Second, the aim is to identify 300 startups, help them with all these parameters or on all these fronts, that is customer connect, investor connect and international immersion. But the point is, it is not over the next 10 years, rather it is over the period of 3 years. ठीक है, 10 साल बहुत लंबा समय हो जाएगा, इतने में तो सरकार तो पता नहीं कहां जाएगी और स्टार्टअप्स का भी पता नहीं क्या होगा, राइट. तो अगले 3 साल हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा. ये अगर यहाँ पे 3 इयर्स कर देते तो अदरवाइज स्टेटमेंट पूरी सही हो जाती, ठीक है. सो क्वेश्चन 3 आंसर विल बी बी, क्योंकि आपसे पूछा क्या था, इनकरेक्ट. हाँ जी, ठीक है, यस, इनकरेक्ट पूछा था. चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. So the Coal India Limited, which is the
major domestic coal producer in India, that is saying here that majority of the mining projects, they are stuck in a limbo. And why is that? Because of multiple or a plethora of reasons. So let's take a look at that. What the CIL is, what is the trouble or what is the challenge the CIL is facing. So 39 coal mining projects, they are running behind their schedule, and the major reason for the delays in implementation of these projects are forest clearances में delay, land के possession में delay, issues related to rehabilitation and resettlement of the people who are displaced because of the mining activities. And ये सारी चीजें, या ये कह लो जो शेड्यूल से पीछे चल रहा है या फिर ये डिले हो रहा है, इसकी यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्यों है इतनी ज्यादा कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और एक ये इशू बन गया है, क्योंकि it becomes all the more crucial in the light of the fact that India's power plants are grappling with depleting stocks at their end. And in India's energy sector, certainly they have a major chunk of contribution. ठीक है, तो अगर जो है ये डिप्लीटिंग सप्लाई इसी तरीके से या डिप्लीटिंग स्टॉक्स जो है इनको फुलफिल या रिप्लेनिश नहीं किया जाता, then you might see that these will be running out of stock and they will have to shut down, right? Then Coal India Limited, which is the body in news here, that is a government owned coal mining and refining corporation. Remember, it is not just mining but also refining corporation. ठीक है, हम इसको अलग अलग ग्रेड में रिफाइन करके यूज करते हैं कोल को. Then it is under the ownership of Ministry of Coal, Government of India. And an important and interesting fact is it is the largest coal producing company in the world. ठीक है, और अगर PSU categorization की बात करें, then it is a Maharatna public sector undertaking, right? So that is with respect to a brief some information on the Coal India Limited front. Yes, let's take a question. Hanji, which of the following statements is or are correct regarding Coal India Limited? First, CIL has envisaged 1 billion ton coal production in the year 2023-24 to meet the coal demand of the country. Second, this roadmap by Coal India Limited is in line with the demand projections made in the Vision 2024. And third, currently CIL accounts for 100% of domestic coal output. Yes, all of you, please type your answers. Hanmantre Shinde says B. Please type the question number also. It's a request from my side. जसबीर सिंह डी. चलिए ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी. बी, सी एंड डी. ठीक है, देखो जो पहली स्टेटमेंट है कि 2023-2024 तक जो CIL ने कहा है कि दे आर planning to have 1 billion ton capacity of coal production by the year 2023-2024 to meet the coal demand. ठीक है, क्योंकि राइजिंग, देखो सीधी सीधी बात है, इसका लिंकेज कहां से आ जाएगा? इंडियाज एनर्जी नीड्स और इंडियन एनर्जी नीड्स, which is increasingly growing, and you have to provide for, if you want to sustain your growth numbers, then certainly you have to provide for the energy sector and its needs. So first is certainly correct. Second, this roadmap by Coal India Limited is in line with the Vision 2024. बिल्कुल Vision 2024 में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट देने की बात की गई है और उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस प्रोजेक्शंस के साथ ही जो है CIL की ये डिमांड है या CIL का ये एम्बिशन है. Then last is incorrect because it is somewhere around 80% or above 80%, that is the domestic coal output which currently CIL is giving, but that is not 100%, right? So third certainly जो है गलत है. आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2, that is C only. Sorry, option C. Yes, बिल्कुल रोहित, exactly. हाँ, it is somewhere near 80%, right? The domestic coal output, if we talk about, that is
given by Coal India Limited, that is, yes, exactly. Chaliye. So, moving to the last question for the day. Hanji, which of the following statements is or are correct about the Sea of Okhots? That is, Vladivostok lies on the Sea of Okhotsk. Second, it is a marginal sea on the Western Pacific Ocean. And third, except for the small area touching Hokkaido, the sea is completely enclosed by Russian territory. Yes, please type your answers for this question. रोहित, क्वेश्चन 4 में सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हो? If you are asking me to explain second statement in question 4, I'll do that certainly after we discuss question number 5, right? Please wait until that. Chalo, 5, for question 5 we have B, C and A. ठीक है, देखो अभी व्लादिवोस्टोक में जो है, you just had the Prime Minister addressing the Eastern Economic Forum, right? And that is why it was in news. But you don't have Vladivostok on the Sea of Okhotsk, rather it is on the Sea of Japan. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा. Second is right that certainly Sea of Okhotsk की जब हम बात करते हैं, it is a marginal sea of the Western Pacific Ocean, and on all the other sides it is touched by Russian territory except for one where the Japanese island of Hokkaido touches it, right? So third and second both are correct and answer will be 2 and 3, that is A. Question 5 answer will be A, right? हाँ बिल्कुल. और एक बार फटाफट मैप देख लेते हैं, then we'll jump to question 4 second statement. You see, this is Sea of Japan. This is Sea of Japan. अगर ये clear नहीं है इतना तो I'll just write it here. This is Sea of Japan and here you have Vladivostok. Whereas this is the Sea of Okhotsk, which is having Russia on all the sides, but one side it is having Hokkaido island of Japan which touches it, right? और ये Western Pacific का जो है marginal sea है. Fine, so that is with respect to last question. हाँ जी, अब एक यहाँ पे डाउट था सेकंड स्टेटमेंट में क्वेश्चन 4 की. देखो क्वेश्चन 4 की सेकंड स्टेटमेंट जो कह रही है कि ये जो रोड मैप है CIL का 2023-24 तक जो इन्होंने टारगेट रखा है कोल की डिमांड को मीट करने के लिए 1 बिलियन टन प्रोडक्शन का, ठीक है? तो विजन 2024 जो डॉक्यूमेंट है जो बात करता है सभी सेक्टर्स की क्या एम्बिशंस हैं और सभी सेक्टर्स में किस हिसाब से चीजें जो हैं रखनी है 2024 तक किस तरीके से we have to plan it out and we have to achieve the targets of various sectors. So accordingly what has been laid down in vision 2024 document, in line with that Coal India Limited ने जो ये projections की हैं या ये target रखा है वो vision 2024 को ध्यान में रखते हुए ही रखा है, right? So as to suit or so as to give a holistic contribution to all the sectors wherever energy demands are located, wherever Coal India Limited's role is there. ठीक है, तो आई थिंक ये सेकंड स्टेटमेंट अब क्लियर हो गई होगी. रोहित का डाउट था आई बिलीव. चलो ग्रेट. सो we have discussed this question also, we have discussed the map also, so that's a wrap. Thank you so much all of you. Study well, stay safe, bye bye and take care.